Good afternoon to all of you. Hope you all are fine. You are good and you are keep studying. So, as we have discussed in our first chapter, Introduction to Cost Accounting, what is cost, what is costing, cost accountancy, and we have also discussed the elements of cost. In elements of cost, there are three elements: material, labor, other expenses. So, in today's class, we will discuss about our first element, that is materials. This is our chapter number 2, paper number 8, cost accounting, material costing, chapter number 2. Okay, let's start with today's class. So, as we have already discussed that material is a very important for our production. It is it plays a very vital role in the production process. Whenever हमें जब भी input डालना होता है to the finished products, input, process and output, material plays an important role. Material is basically the physical substance. It is the anything which has a physical existence. As we all know that in case of a steel industry, coal is the major raw material. In case of a paper industry, wood is the raw material. So material plays a major role in the product costing. You can say in the total cost. In total cost, it plays 40 to 80% of the total cost. Fine. Let's start with the presentation. So, in material costing, there are total 29 topics which we had covered. In theoretically 29 topics which we have covered, and practically there are 10 topics which are important, which are there in the total syllabus. So in theoretical topics, in today's class we will discuss meaning of material, material control and its objectives, requisites of material control system, importance of proper recording and control of material, elements of material control. These all are the topics, theoretical topics, which we will cover today. And stock levels. What stock levels? We'll discuss economic order quantity, inventory turnover. In practical topics, there are topics like stock levels, reorder quantity, stock levels and reorder quantity, inventory turnover ratio, input output ratio, ABC analysis, stock out cost, determination of purchase cost, economic source and stock ledger. In today's class, we will discuss inventory turnover ratio, input output ratio and second topic EOQ, that is the reorder quantity. Okay, let's start with the meaning of material. As we all know that cost accountancy has cost accounting standards. We use various standards, principles for recording of the transactions, financial transactions. CAS 6 says material, about the material cost.
कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है मटेरियल कॉस्टिंग का. Material refers to all the commodities. It means it refers to all the commodities जो consume होती हैं in the process of manufacture. During the process of manufacturing, from input till finished products, material is consumed. It can be stored, sacked, and stockpiled. What is stored, what is sacked, and what is stockpiled? Stores means हम उसको storage कर सकते हैं. What is sacked? हम एक large bags में उनको बांध के रख सकते हैं. It can be stockpiled. Stockpiled is we can accumulate. So, material means all the commodities that are consumed in the process of manufacture. It plays a vital role or a significant role in the total cost of any product. So, we have discussed material means any substance or a commodity which has physical existence, which has physical form, or last that forms the part of finished goods. The term stores is often synonymously used या synonymously with the materials. हम लोग materials को stores भी कहते हैं, inventory भी कह सकते हैं. The term materials or inventory covers not only raw materials. हमने बात की कि material means not only raw material but also the components, work in progress, finished goods and scrap. These all are the components, WIP, finished goods. These all are the part of material. Material has a wide scope. मटेरियल को अकॉर्डिंग टू कैस 6 सिर्फ रॉ मटेरियल्स नहीं इंडिकेट करेंगे. इट ऑल्सो इंक्लूड्स द कंपोनेंट्स, WIP वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स जो अभी मिडिल स्टेजेस में है, जिन पे अभी और प्रोसेस होना बाकी है, फिनिश गुड्स एंड स्क्रैप ऑल्सो. Inventory also constitutes a vital element in the working capital. ये अभी हम पढ़ते हैं. इससे पहले हम लोग बात करें मटेरियल constitute 40 to 80% of total cost. It differs from industry to industry, from manufacturing sector to other manufacturing sector, as material cost has a very great, you can say, great importance. Materials are also known as stores and inventory. Stores में हम लोग tools, jigs, dyes, lubricants, consumables, these all are the examples of stores. Materials. Inventory में हमने बात की components, WIP and last is scrap and finished goods.
These all are covered in the term material. आपने सबने सुना होगा स्टॉक ऑडिट. What is stock audit? It is the audit of material. That material is lying according to the various standards या एक proper form में लगी हुई है. बिकॉज इन्वेंट्री के अंदर सिर्फ हम रॉ मटेरियल्स की ऑडिट नहीं करते, हम लोग स्टोर्स की भी करते हैं, हम लोग इन्वेंट्री की भी करते हैं, कंप्लीट मटेरियल की, फिनिश गुड्स की भी होंगी, स्क्रैप की भी होंगी. दीज ऑल आर द एरियाज वी विल कवर इन दी स्टॉक ऑडिट. स्टॉक ऑडिट में रॉ मटेरियल भी कवर होगा, स्टोर्स भी कवर होंगे, ऑयल्स, लुब्रिकेंट ऑयल्स, ये भी सब कवर होंगे, फिनिश्ड गुड्स भी कवर होगा. It is the plays a very important role in the product cost, or you can say total cost. Inventory also constitutes a vital element in the working capital, so it is treated equivalent to cash. हमने P&L accounts में भी पढ़ा होगा कि inventory is the main element of working capital. It means जितना हमारा लिक्विडिटी कैश की है उतनी ही हमारी लिक्विडिटी इन्वेंट्री की है. So it is equivalent to cash. It is treated as equivalent to cash in costing as well. There are three principles of material. What are the three principles we'll use in case of materials? First is economy, second is efficiency, and third is effectiveness. So what these principles says to us. Three E's. First is economy, efficiency, effectiveness. See, materials में economy means procurement. Economy, we are using the word economy in case of procurement. जब भी हमें procure करना है, procure means raw materials को लेके आना है अपनी फैक्ट्री में, मशीन्स तक लेके आने के लिए जब हमने तय करना है कि कितना हमारा रॉ मटेरियल यूज होगा फॉर कितने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में, तो जो उसको लेके आना, प्रोक्योरमेंट करना, दैट शुड बी economical. That should be that is a very serious matter, or you can say a critical matter. So there should be an economy in the procurement of the raw material. What is efficiency? Efficiency we have to utilize the handling of मटेरियल. एफिशिएंसी को हैंडलिंग ऑफ मतलब मटेरियल को फैक्ट्री तक लेके आने के बाद मशीन्स तक लेके जाना, मशीन्स तक लेके जाने के बाद उनकी प्रोसेसिंग के बाद एफजी तक वेयर हाउस से कस्टमर तक पहुंचने में जो हैंडलिंग ऑफ मटेरियल है, दैट शुड बी वेरी एफिशिएंट. What is effectiveness? Effectiveness means we have to manufacture. In manufacturing, desired products should be manufactured. जब जो चाहिए था वही बना है, that should be known as effectiveness. In manufacturing, desired product as per standard बना है,
इसको इंश्योर करना is the effectiveness. These are the principles we use in materials: economy, efficiency, and effectiveness. Fine. Next is the economy will use in procurement of raw material or finished goods or WIP or anything. Efficiency, handling of material, whether at the raw material stage or FG stage or in WIP stage, efficiency should be maintained. Effectiveness, desired products बन रहे हैं, इसकी assurance देना is the effectiveness. Next, come to material we had discussed. Next, come to material control, its objective, requisites. So, material control. हमने पढ़ा मटेरियल सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं होता, इट ऑल्सो इंक्लूड्स स्टोर्स, इन्वेंट्री, जिग्स, टूल्स, कंज्यूमेबल्स, WIP, FG. इसकी बहुत बड़ी डिफाइंड डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू कैस. सो मटेरियल को कंट्रोल करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या ऑब्जेक्टिव है मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए? मटेरियल को क्या करता है? इट मिनिमाइज द इंटरप्शन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर हमारा मटेरियल ही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसमें अगर हमारे को रॉ मटेरियल ही सबसे इकोनॉमिकली मिल जाएगा वेंडर से नेगोशिएशंस करके, तो हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो मिनिमम इंटरप्शन पे चलेगा. सेकेंड इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल? हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्यों इंपॉर्टेंट है. इट मींस हमें क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए कॉस्ट को भी ध्यान में रखना है. इट मींस कॉस्ट भी उतना हो, हमारी क्वालिटी भी डिट्रॉइट ना हो, तो हमें मटेरियल को कंट्रोल करने की जरूरत है. बिकॉज अल्टीमेटली हमारा ये टोटल कॉस्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा. रिडक्शन इन वेस्टेज. मटेरियल कंट्रोल अगर हम लोग कर लेते हैं तो अल्टीमेटली हमने बोला कि एफिशिएंसी, सेकेंड प्रिंसिपल, एफिशिएंसी इन हैंडलिंग. हैंडलिंग मींस कि हम लोग हैंडल करते हुए या एक मशीन से दूसरे मशीन में प्रोसेस जाते हुए वेस्टेज जितने मिनिमम होंगे उतना हमारा मटेरियल कंट्रोल अच्छे से हो जाएगा. एडिक्वेट इंफॉर्मेशन. Why adequate information for all the materials and stores are useful? Because we know the reliable information, we could get the reliable information whenever necessary related to the losses, related to the pilferages, related to other things, so that जो हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस है उस पे इफेक्ट ना पड़े. एडिक्वेट इंफॉर्मेशन मीन्स मटेरियल कंट्रोल हम प्रॉपरली करेंगे तभी हमें लॉसेस का, वेस्टेजेस का, अदर थिंग्स का पता चलेगा. एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल कंट्रोल, हम क्यों करते हैं मटेरियल कंट्रोल? ताकि हमारे ऑर्डर्स जो हैं वो टाइमली कंप्लीट हो जाए. व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मटेरियल कंट्रोल? प्राइस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट. बिकॉज अगर हमारा मटेरियल नेगोशिएशंस, कॉस्ट सब कुछ ध्यान में रखते हुए, वेस्टेज कम करते हुए, तो हमारा प्राइस होगा फाइनल प्रोडक्ट का, वो हम लोग बिल्कुल जो हमने स्टैंडर्ड है और एक्चुअल के अकॉर्डिंग पहुंच सकते हैं. क्वालिटी को प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं अगर हमारा मटेरियल कंट्रोल में. कॉन्टिन्यूटी रहेगी. हमारी स्टॉक होल्डिंग एंड स्टॉक आउट कॉस्ट. स्टॉक आउट कॉस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. व्हाट इज स्टॉक आउट कॉस्ट? अगर हम ये सारी चीजें ध्यान में रखते हैं, स्टॉक होल्डिंग मींस हमें कितना स्टॉक को होल्ड करके रखना है, मटेरियल्स को होल्ड करके रखना है, इसकी अपनी कॉस्ट है. EOQ लेवल्स, टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल में हम लोग पढ़ेंगे. स्टॉक आउट कॉस्ट भी टेक्निक है मटेरियल कंट्रोल की.
वेस्टेजेस और लॉसेस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं और हमें रेगुलर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट द अवेलेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल्स. These all are the importance of material control. So requisites क्यों जरूरी है? Coordination and cooperation between the departments. यूज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन ऑल द, मतलब हम लोग मटेरियल कंट्रोल करने के लिए क्या क्या टेक्निक, क्या क्या रिक्विजिट्स लगाएं जिससे कि हमारा इफेक्टिवली मटेरियल को कंट्रोल कर पाए. देयर शुड बी अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, बिकॉज हमें एडिक्वेट इंफॉर्मेशन मिलेगी हर एक डिपार्टमेंट से, तभी हम लोग मटेरियल को कंट्रोल कर सकते हैं. देयर शुड बी अ स्टैंडर्ड फॉर्म्स documents in all the stages means चाहे वो हमारा RM stage पे है, चाहे हमारा WIP stage में, चाहे हमारा FG stage में, proper tagging should be there. And if there are proper tagging, colors identification कर दो, इसमें blue color का होगा तो WIP का है, yellow color का card बनेगा अगर loss हो रहा है तो वो RM से related है. Proper documents should be there so that कि हम लोग एक control कर पाए material को हर एक stage पे. Classification, coordination, standardization and simplifications of materials. Standardization and simplification and classifications हम लोग कैसे कर सकते हैं? हर एक मटेरियल को एक नाम देके, एक टैग देके, या एक कह सकते हैं कोड देके, प्रॉपर कोड दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाला मटेरियल की इतनी शॉर्टेज और हमें इससे इतना मंगवाना है, और ये वाला मटेरियल ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि प्रोडक्शन में जल्दी जल्दी यूज हो जाता है. तो हम ये सब चीजें एनालिसिस कर सकते हैं. प्लानिंग ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल. अगर हमारी टैगिंग प्रॉपर है, क्लासिफिकेशन मटेरियल्स की प्रॉपर है, प्लानिंग भी मटेरियल कब हमें चाहिए उसकी प्लानिंग भी हम लोग इफेक्टिवली कर सकते हैं. एफिशिएंट परचेज ऑर्गेनाइजेशन. परचेज ऑर्गेनाइजेशन भी एफिशिएंट होगा. हर एक लॉस को, हर एक वेस्टेज को, हर एक प्रोडक्शन प्रोसेस में जो जो मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है अगर एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करके चलेगी. बजटरी कंट्रोल भी हम लोग कर सकते हैं. बजटरी कंट्रोल ऑफ परचेसेस मींस कि हम लोग पहले से ही बजट्स बना के रखें कि कितना हमारा यूनिट्स प्रोडक्शन है, कितनी हमारी कैपेसिटी है, अकॉर्डिंग टू कितनी हमारी डिमांड है, और हम लोग बजट्स कैसे सेट करें परचेसेस के लिए. Appropriate records to control issues, utilization of stores in the production. There should be proper recording of the control. जो भी issues हो रहे हैं, जो भी stores में utilization हो रही है, because stores भी एक हमारा अलग एक you can say एक अलग area है जिसको manage करना भी बहुत important task है. Efficient system of internal audit and internal checks. Apart from the stock audit, internal checks, internal systems, managers should be there जो उनको प्रॉपरली ऑडिट करें कि हमारा मटेरियल कहीं खराब तो नहीं हो रहा, कहीं पड़े बाहर बिना शेडिंग के पड़े होने से खराब तो नहीं हो रहा. देयर शुड बी प्रॉपर प्लेस पे पड़ा है, तो देयर शुड बी अ प्रॉपर चेक. इंटरनल चेक्स और इंटरनल ऑडिट शुड बी देयर सो दैट कि हम लोग मटेरियल को अपनी कंट्रोल कर पाए. सो So we have discussed meaning of material. Material में सिर्फ हमारा raw material नहीं होता. Material also includes our WIP, our FG, stores, inventory, consumables, tools, jigs, dies. These all are the parts of the material as per CAS 6. We have to record each and every loss, each and every wastage, because अगर हमें हर स्टेज पे पता होगा कि हमारे इतने लॉसेस हो रहे हैं, या हमारे हैंडलिंग में लॉस हो रहा है, या हमारा प्रॉब्लम का एरिया क्या है, तभी हम लोग प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं. दैट्स व्हाई अगर हमने बात करी कि मटेरियल एक मेजर रोल है, एक मेजर एरिया है टोटल कॉस्ट का, 40 to 80% और से 60%, 70%. हर एक इंडस्ट्री का अलग अलग है. हर एक इंडस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट होती है. हर एक इंडस्ट्री में डिफरेंट तरह के हम लोग मेथड्स यूज करते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्लेयर इन द टोटल कॉस्ट.
So we have to control the materials. We have to proper check internal audits. When proper controlling system should be there to control the materials. Fine. So we have I have provided you this book, that is the costing for volume 1, which has chapters. Chapter number 1, introduction to cost accounting, material costing, labor costing, overhead costing, and operating costing. So these are the chapters which we had, मैंने आपको सबको कुरियर कर दिए हैं, और इसी में से ही हम लोग आज प्रैक्टिकल चैप्टर्स करेंगे. वंस यू विल गेट दी बुक्स एंड आप लोग अपना होमवर्क क्वेश्चंस भी करना. फाइन. Okay, we will start with the next topic, that is the inventory turnover. So, inventory turnover ratio, ये हमने अपने अकाउंट्स में 11th 12th और फाउंडेशन लेवल पे, ग्रेजुएशन जिसने कर रखी है उसने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो. बट नाउ एज इट्स द क्लास फॉर मटेरियल कॉस्टिंग, तो हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे. इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट. Inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio, also known as stock turnover ratio. It means cost of material consumed divided by average stock of material, where average stock is equal to opening stock plus closing stock divided by 2. Stock turnover in terms of days is equal to days of the period divided by stock turnover rate. So, inventory turnover ratio. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का हमने भी फॉर्मूला पढ़ा. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें क्या एक्सप्लेन करता है? इट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप between the consumption of raw material हमें रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ ड्यूरिंग द पीरियड एंड एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो हमें मेंटेन करके रखना है, विच इज मेंटेन्ड during such period. So, अगर हर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द पीरियड और एवरेज स्टॉक विच इज मेंटेन ड्यूरिंग सच पीरियड, इट मीन्स हम लोग बात करें कि ग्रेटर द स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जितनी ज्यादा रेशियो हाई होगी, हम इसको टाइम्स में लेते हैं, जितनी ज्यादा हाई होगी हमारी स्टॉक पॉलिसी उतनी एफिशिएंट होगी. द मोर एफिशिएंट इज आवर स्टॉक पॉलिसी. It means high level
हमारा फेवरेबल पोजीशन बताता है। जितनी ज्यादा हमारी स्टॉक टर्नओवर रेशियो का लेवल ज्यादा होगा, हमारी फेवरेबल पोजीशन है। क्यों फेवरेबल पोजीशन है? इट मींस लेसर इन्वेस्टमेंट made in stock of RM as compared to consumption. It means हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एक्सप्लेन करता है कि कितना कंजम्पशन हुआ रॉ मटेरियल का ड्यूरिंग द पीरियड, और हमें अपनी एवरेज स्टॉक कितनी मेंटेन करके रखनी है ड्यूरिंग सच पीरियड। जितना ज्यादा टर्नओवर रेशियो होगा, टर्नओवर मींस चला गया स्टॉक, उतनी हमारी फेवरेबल पोजीशन होगी। लेस द इन्वेस्टमेंट, हमें कम से कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इन द स्टॉक ऑफ RM एज कंपेयर टू द कंजम्पशन। सिमिलरली, लो लेवल indicates the unfavorable position. Excess investment made in stock of RM as compared to consumption. So, higher stock turnover ratio indicates the fast moving material. Lower stock turnover ratio indicates the slow moving material. We will discuss about the length in number of days. जितनी कम लेंथ होगी, if length is short, हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तब और एक्सप्लेन करूंगी। फास्ट मूविंग, वाइसा वर्सा। ओके, दिस इज द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो एक्सप्लेन करती है हमें रिलेशनशिप बिटवीन द रॉ मटेरियल्स एंड द एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मेंटेन ड्यूरिंग सच पीरियड. It tells us how many times in a year stocks are used up and replaced. हम लोग स्टॉक टर्नओवर रेशियो इन टर्म्स ऑफ डेज क्या होगी? डेज ऑफ द पीरियड डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेट हमें बताती है कितना, हाउ मेनी टाइम्स इन ए ईयर हम इस स्टॉक को यूज कर लिया और हमने रिप्लेस करना है. इट इज एन इंडिकेटर ऑफ रेट ऑफ कंजम्पशन वेदर दी मटेरियल्स आर फास्ट और स्लो. मैंने बताया आपको, जितनी ज्यादा टर्नओवर रेशियो होगी हमारा उतना ही फास्ट मूविंग मटेरियल होंगे. जितनी स्लो कम होगी टर्नओवर रेशियो, low turnover ratio, it means slow moving materials. Okay, let's come to the practical portion. In your book, page number 62, question number 16, inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio, the following figures are taken from the records of a company for the year 2015. Material X, material Y, opening stock is given, purchases and closing stock. Calculate the material turnover ratio and of the above and two materials and express a number of days. The inventory is held, average inventory is held. Also determine the two materials is दोनों में से कौन सा
फास्ट मूविंग है. इट मीन्स हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेजेस दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है. We have to calculate, there are two materials, material X and material Y. We have to calculate the material turnover ratio. Okay. So, practical questions, volume 1, page number 62, question number 16, topic is inventory turnover ratio. Okay. We have material X and material Y. First of all, we have opening stock, purchases and closing stock. Opening stock plus purchases plus closing stock इससे पहले मैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का सबसे पहले एग्जाम में जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो ऑलवेज फॉर्मूला के भी मार्क्स होते हैं. जो आप लास्ट में टाइम्स लगाओगे, परसेंटेज लगाओगे, उसके भी हमेशा मार्क्स होते हैं. सो जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना तुम्हें फॉर्मूलाज की भी स्टार्ट में करना और लास्ट में उनका यूनिट्स है, टाइम्स है, परसेंटेज है, जो भी है उसका यूनिट वो भी जरूर लगाना. So, before starting the question, we will write the formula. Material turnover ratio is equal to cost of raw material consumed divided by average stock of raw material. And second हमें क्या बताना था? Material turnover ratio. Second is express in number of days. Number of days में express करने के लिए हमें बोलते हैं उसे stock holding period. Stock holding period is equal to number of days, 365 days. Number of days divided by material turnover ratio. मटेरियल टर्नओवर रेशियो को हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कह सकते हैं, हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी कह सकते हैं. सो मटेरियल एक्स मटेरियल वाई मटेरियल एक्स मटेरियल वाई. हमने बोला कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. सो मटेरियल एक्स का ओपनिंग कितना है हमारा? 1400, 23,400. 1400 plus 23,000 minus 400. Cost of raw material consumed divided by
average stock. For material Y, 2000, 3600 and 2400. 2000 plus 3600 purchases minus 2400 is the closing stock. So, cost of raw material consumed is equal to, in case of material X, is 24,000 and in case of material Y is 3,200. Material turnover ratio, cost of raw material consumed divided by our average stock of material. Average stock of material हमारी क्या होगी? Average stock of raw material is equal to opening stock plus closing stock divided by 2. So, opening stock in case of material X is 1400 and closing stock is 1400 divided by 2, that is 900. In case of material Y, it is 2000 plus 2400 divided by 2 is equal to 4400 divided by 2, 2200. This is the cost of raw material consumed and this is the average stock 900 and 2200. So, we will find the material turnover ratio is equal to cost of raw material consumed divided by average stock. आपने पूरा फॉर्मूला लिखना है एग्जाम में. 24,000 divided by 900 is equal to 26.67 times. And in case of material Y, that is 3,200 divided by 2,200 is equal to 1.45 times. So, material turnover ratio we have calculated. We have to express in number of days the average inventory is held. That is the stock holding ratio. Stock holding ratio formula is number of days divided by material turnover ratio. Stock holding period is equal to number of days divided by material turnover ratio. Number of days is 365 divided by material turnover ratio is 26.67. In case of material Y, 365 divided by 1.4 times 1.45. That means how many? Calculate करके देखना. 14 days and here it is 252 days. हम लोग ने मटेरियल टर्नओवर रेशियो भी कैलकुलेट कर लिया. हमने एक्सप्रेस इन नंबर ऑफ डेज भी. ऑल्सो डिटरमाइन विच ऑफ द टू मटेरियल इज फास्ट मूविंग. एज वी हैव डिस्कस्ड कि जितनी ज्यादा हमारी स्टॉक टर्नओवर रेशियो होगा उतनी हमारी मटेरियल क्या है? फास्ट मूविंग है. मटेरियल एक्स के केस में रेशियो कितनी है? 26.67. रेशियो ज्यादा है, डेज कम है. जितने कम डेज होंगे, एज वी हैव डिस्कस, सी लेंथ इज शॉर्ट. जितने कम लेंथ डेज में होंगे उतना हमारा मटेरियल फास्ट मूविंग है. जितनी लेंथ लॉन्ग होगी हमारा मटेरियल स्लो मूविंग है. सो question number 16 conclusion is
material X is fast moving because it is held in store for lesser number of days as compared to material Y. So material X is fast moving. फास्ट मूविंग क्यों है मटेरियल एक्स? क्योंकि हम उसका स्टॉक टर्नओवर रेशियो ज्यादा है, बहुत ज्यादा, 26.67 टाइम्स जा रहा है. एंड मटेरियल वाइज स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज 1.45, दैट इज वेरी लेस, सो इट इज अ स्लो मूविंग मटेरियल वाई. स्टॉक होल्डिंग पीरियड मतलब कितने पीरियड्स के लिए हमारा, कितने नंबर ऑफ डेज के लिए हमारे स्टॉक बड़ा खड़ा रहा, दैट इज दी 14 डेज इन केस ऑफ मटेरियल एक्स. It means जितना कम लेंथ उतना फास्ट मूविंग. Conclusion is material X is the fast moving because it held in the store for lesser number of days as compared to material Y. Hope this question is clear to all of you. Question number 16, inventory turnover ratio. Next is question number 17. Question number 17. Again, volume 1, page number 62, material costing. Question number 17 क्या कहता है आपको? The following transactions are related to a component during the year 2012-13. Date is given 1/4/2012, 18/4/2012, 10th January, 16th March, 31st March. Purchases, consumption and balance units. We have given total consumption is 400. We have to calculate the material turnover ratio. Okay. First of all, dates are given 1/4/2012 से लेकर 18/4/2012. 1/4/2012, 18/4/2012, 10th January 2013. On 1st April 2012, कंपनी ने परचेज किया था कोई कंपोनेंट 200 यूनिट्स, बैलेंस भी 200 रह गया. 18th अप्रैल को आउट ऑफ 200 100 यूनिट्स कंज्यूम हो गई. 10th जनवरी में अगेन 50 यूनिट्स कंज्यूम हुई. 16th मार्च को 200 और खरीदी तो हमारा 250 बैलेंस रह गया, 50 पुराना और 200 अप वाला. 31st मार्च एंडिंग पीरियड में 250 का 250 कंज्यूम कर लिया और बैलेंस इज नील. और टोटल कंजम्पशन हमारी हो गई, टोटल यूनिट्स कितनी हमने परचेज की थी, 400 परचेज की थी, कंजम्पशन भी हमारी 400 हो गई. So 1/4/2012 200 units, 18/4/2012
100 units. 10th March 2013 कितनी यूनिट्स थी हमारी कंजम्पशन 50 units. Then 16th March 2013 यूनिट्स थी हमारी 16th March यूनिट्स आर बैलेंस यूनिट्स की बात करूंगी 250. And last is the 31st March 2013. Balance units are nil, zero, because सारा का सारा consumption हो गया. We have to find the material turnover ratio. Material turnover ratio, cost of raw material consumed divided by average stock of raw material. So ये हमारा बैलेंस अमाउंट इतना है on 1st April till the 31st March. Average stock in material turnover ratio हमारा total material consumed कितना हुआ? Total material consumed is 400. Directly we will put 400. Average stock कैसे calculate करेंगे? Average stock in this case is number of units, balance units multiply by कितने number of days के लिए procure करा, कितने number of days के लिए रख के रखा, that is the average stock. So in case of 1st April 2012 से लेकर 200 यूनिट्स को हेल्ड करके रखा, होल्ड करके रखा टिल 1st April till 17th April, मतलब फॉर 17 days. From 18th April till 9th January 2013 कितने नंबर ऑफ डेज हो गए? From 18th April 2012 till 13th January 2013 तक कितने डेज हो गए? First of all April, May, June, July, August, September, October, November, December and January. अप्रैल में हमारे 18 to 30th अप्रैल हमारे कितने डेज हो गए? 13 डेज. मई में पूरे कंप्लीट 31st, जून 30, जुलाई 31st, अगस्त 31st, सितंबर 30th सितंबर, अक्टूबर 31. हमने इस स्टॉक को होल्ड करके रखा है. अगेन 30 नवंबर, दिसंबर 31 एंड जनवरी में हम लोग 1 to 9 लेंगे. क्यों हम लोग 1 to 9 लेंगे? बिकॉज 10th से लेकर हम लोग फर्स्ट का लीव करके जो नेक्स्ट वाला होता है उसको हम लोग नंबर ऑफ डेज में काउंट करते हैं. सो जनवरी डेज आर 9 days. टोटल इज 267 days. So 267 days हमारे हो गए. 267 days. कंजम्पशन कितनी है हमारी? 100 यूनिट्स. 17 into 200. 100 into 267.
200 into 17 number of days and units. Next कितने हो गए 50. Next is 250 and next is 0 multiply by number of days. 31st March एक दिन के लिए हम लोग लिया है. From 10th January 2013 till 16th March 2013. The days are 65 days. Calculate करना. And from 16th till 31st there are 15 days. So average stock is equal to 200 into 17 plus 100 into 267 plus 15 to 65 plus 215 to 15 plus 0 into 1 divided by average stock is number of units into number of days divided by total number of days. Divided by 365. So we will calculate, we will get average stock is held 102 days. We will put this figure 102 material turnover ratio is equal to 3.92 times. This is the answer. So we have to find the material turnover ratio in this case. If the question says to you that इतनी परचेज हुई थी, इतनी कंजम्पशन हुई थी, बैलेंस इतना है, ओपनिंग नहीं है, क्लोजिंग नहीं है, we will find the material turnover ratio. Then हम लोग इस तरह से find out करेंगे number of days into number of units, उनका totality करके divided by total number of days हमारा average stock निकलेगा. और consumption हमें दी हुई है 400 consumption 400 units. So material turnover ratio in this case will be 3.92 times. क्वेश्चन को जो भी क्वेश्चंस मैं क्लास में कराऊंगी प्लीज उसको नोटबुक में सॉल्व करना. साइमल्टेनियसली आपके जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 16, 17 जो पेज नंबर 62 पे हैं, सिमिलरली देयर आर रिविजनरी क्वेश्चंस. रिविजनरी क्वेश्चंस जो हैं वो होंगे आपके पेज नंबर 71. सी 71 पे से सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 इसी तरह से आपके क्वेश्चंस लिखे होंगे. ये आपके होमवर्क में है क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 16 आपका होमवर्क में है, क्वेश्चन नंबर 17 होमवर्क में है. बट आप क्वेश्चन नंबर 17 में एक चीज नोट डाउन करना, जो 144 डेज है ये 146 डेज है, बस इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेना. एंड क्वेश्चन नंबर 18 में भी आपको नंबर ऑफ डेज लिखा दिया हुआ है. मटेरियल टर्नओवर रेशियोज आप ही मुझे कैलकुलेट करके देना. सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जिस तरह से मैं आपको क्वेश्चंस क्लास में कराऊंगी 16, 17, 18 उसी तरह से आपके रिविजनरी क्वेश्चंस भी हैं होमवर्क के लिए 16, 17, 18. ओके, वी विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 of inventory turnover ratio. Question number 18.
start with this question. Vostro Limited is contemplating a change in the inventory policy. Currently, the firm has an inventory turnover of 24 times a year. Vostro Limited is contemplating a change in the inventory policy. It means Vostro Limited want to change in the inventory policy. Currently, the firm has inventory turnover ratio 24 times a year. Inventory turnover ratio always we calculate in times. Sales have been holding steady at the rupees 2,40,000 per year. Variable costs are 70% of the total sales. The company feels that if we want to increase the inventories, it could also increase the return before taxes, which is 20%. The company estimates the following relationship between the inventory turnover and sales. Inventory turnover ratio for the period 24, 12, 6, 4 मतलब आपको situations दिए हुए हैं, first situation, second situation, third, fourth and fifth. You have to use the marginal analysis technique and find the optimum inventory policy. It is a situational based question of inventory turnover ratio. It means a company wants to change the inventory policy. There are different situations, 1, 2, 3, 4 and 5th situation. Out of 5, which inventory policy is optimum? First of all, we have to find. Currently, 24 times a year the firm is working on 24 times. Sales are 2,40,000 per year. Out of sales, 70% are the variable costs. And company also feels that it wants to increase the inventories. It could increase the return before the taxes, which is 20%. We have to find the optimum inventory policy. I'm giving you a minute, read out a question, and then we will discuss this question and we will solve it. So, question number 18, volume 1, page number 62. We have to find out the situation statement showing determination of optimum inventory policy. There are situations. First is 24, 12, 6, 4 and 3. 24 times, 12 times, 6, 4 and 3. This is the material turnover ratio and currently company जो है वो उसकी 24 टाइम्स है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. Sales are also given.
Sales are 2,40,000, 2,52,000, 2,61, 266 and 270. 2,52,000, 2,61,000, 2,66,000 and last is 2,70,000. After sales, we have given the variable costs are 70% of the total sales. हमने सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना है, मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक यूज करनी है. मार्जिनल कॉस्टिंग हमने लास्ट क्लास में वी हैड डिस्कस्ड. मार्जिनल कॉस्टिंग इज द वेरिएबल कॉस्टिंग and from sales if we deduct variable cost we will find out the contribution. How much of the product contributes to us, at what level, कौन से inventory level पे contribution कितना है, we have to indicate it through the marginal costing technique. The variable cost is 70% of the total cost. If we will calculate 2,40,000 का 70%, so we will get the answer minus 168,000. Please whatever questions I am solving, चाहे वो homework है चाहे वो class work में है जो मैं करवा रही हूँ, each and every question you have to solve by your own in your notebooks. 176,400, 182,700, 186,200, 189, 1,89,000 minus will get the contribution 72,000, 75,600, 78,300, 79,800, 81,000 will get the contribution. Okay, again it is saying sales 24 times पे 2,40,000 थी. Okay, we will get 24 2,40,000. Variable cost we had discussed. Now company feels that if it was to increase the inventory, if company has to increase the inventory, then it could increase the return before taxes which is 20%. अब हम इस लाइन को पढ़ेंगे. We have to we could also, that is the opportunity cost of the inventories, we have to increase the return before taxes जो कितने हैं, that is 20%. Okay, will minus the opportunity cost. Cost on inventory. Working note 1. Afterwards, we will get the net profits. So, in the question, they are saying अगर हमें inventories को increase करना है, it means average stock को. Average stock क्या होता है? Average stock is cost of material consumed या cost of goods sold भी कह सकते हैं, divided by inventory turnover ratio. We have given cost of goods sold. Cost of goods sold is this cost 1,68,000. इतने में हमारा cost of goods sold निकल रहा है 182,700, 186,200.
189 divided by turnover ratio. Turnover ratio is also given, that is 24, 12, 6, 4, 3. After solving it, we will get 7,000, 14,700, 3450, 46,550, 63,000. We have to find the opportunity cost, which is the working note 1. Off on inventory is 20%. Question पे आते हैं again. If we if it was to increase the inventories, then it would also increase the return before the taxes, which is 20%. That is the opportunity cost that we have to take in our net profits. That is 7,000 का 20%, 1,400, 2,940, 6,090, 20%, 9,310 and 1,2600. So this opportunity cost we will take here 1,400, 2,940, 6,090, 9,310 and 1,2600. हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कंट्रीब्यूशन से माइनस करेंगे, then we will get our net profits, that is 7,600, 72,660, 72,210, 74,90, 68,400. So in what situation कौन से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में नेट प्रॉफिट सबसे ज्यादा है? इन विच केस 24 पे 7,600 सबसे ज्यादा है हमारा 12 टाइम्स से, 12 टाइम्स पे नेट प्रॉफिट इज 72,660, विच इज नेट प्रॉफिट सबसे ज्यादा है इस केस में. So in this question, our advice to the company is that the optimal inventory policy is 12 times, as we get more profits out of it. See, in costing, in first class we had discussed that costing is an art or a science. It is a practice. So if we will practice this question by this method, then always we have to give the conclusion. आप जब भी मैं एग्जाम्स में जब हम आपके पेपर चेकिंग होती है, देन आपके फॉर्मुलेस के भी मार्क्स होते हैं, आपकी प्रेजेंटेशंस के भी मार्क्स के साथ साथ आपका जो कंक्लूजन है दैट आल्सो कैरीज 1 मार्क्स. इस कंक्लूजन को देना, एडवाइस देना, जो भी क्वेश्चन मांग रहा है, here question was asking you have to determine the optimum inventory policy. In this case, optimum inventory policy is 12 times, as we get more profits out of it. This is the advice. So I am giving you homework
question number 16, question number 17. In question number 17, answer is written 2.5 times 146 days. करेक्ट कर लेना. क्वेश्चन नंबर 18 का मटेरियल टर्नओवर का आंसर है 26.67, 14.29 and 1.46 times. Page number 71, volume 1. So, our next slide, we have done with the practical portion of inventory turnover ratio. Then we will discuss input output ratio. What is input output ratio? Input output ratio explains the relationship between the consumption of input and output obtained as a result of such consumption. As the name indicates, input output, कितना input हुआ उससे कितना output हुआ, input output. This ratio is calculated with the help of the formula input divided by output into 100. If we can say, if the ratio is high, then it is unfavorable. In stock turnover ratio जितना high होगा उतनी favorable है. Whereas input output ratio, if it is high, then it is unfavorable position. It indicates manufacturing losses. See, in stock turnover ratio, it means कि मैंने stocks बना लिया. I have made the stock. I have produced the product. Completely कितने time में वो निकल गया. That is the stock turnover ratio. Consume कितना हो गया average stock के according. Input output कितना input डाला उससे output कितना निकला. हमें ये भी calculate करना पड़ता है. जितना ज़्यादा ratio होगा उतना हमारा indicate the manufacturing loss. If the ratio is low, then favorable position, then it represents lesser losses. So, इनपुट आउटपुट रेशियो का एक क्वेश्चन करते हैं. इनपुट आउटपुट रेशियो क्वेश्चन नंबर 19. You are given below the following information relating to the use of a material in the production. Standard, actual. Input of material 12 kg, 2000 kg actual है. Material content in final product standard 10 kg, actual 1600 kg. Cost per kg of material is ₹20. You have to calculate the standard input output ratio, actual input output ratio, also standard and actual material cost per unit, also comment the overall efficiency. So in input output ratio, see, I'll discuss one thing more, want to discuss. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16,
17, 18. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी यही पढ़ी और रिविजनरी भी यही पढ़ी. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और रिविजनरी प्रॉब्लम्स में भी 16, 17 और 18. इनपुट आउटपुट रेशियो 19 और 19. So in this question, input of material is given, material content is given, mid cost per kg of material is given. You have to find the input output ratio, actual input output ratio. Okay. So again, page number 62, volume 1, question number 19. We have to find out the standard input output ratio. Okay. Formula is input upon output into 100. It means standard is 12 upon output. Material content is 10. 12 upon 10 into 100. So we will get the 120%. B part, actual input output ratio. It is input upon output into 100. Actual is 2000 divided by 1600 into 100. 2000 divided by 1600 into 100. We will get 125%. Third, we have to find out the standard and actual material cost per unit. Standard material cost per unit is equal to standard cost per unit multiplied by standard input output ratio. This is the formula for standard material cost per unit. A part and B part is the actual material cost per unit is equal to cost per unit multiplied by actual input output ratio. Cost per unit in this question is cost per kg of material is rupees 20. So 20 into standard input output ratio is 120% and actual is 125%. It means rupees 24 and here actual material cost per unit is rupees 25. Also we have to find out the comment on the overall level of efficiency. हमने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट रेशियो 120% कैलकुलेट कर ली, स्टैंडर्ड एक्चुअल इनपुट आउटपुट रेशियो 125% कैलकुलेट हो गई, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट रुपीज 24, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट रुपीज 25. So you can say A, B, C.
D part is overall performance we have to find regarding use of material is overall performance क्या होगी in your viewpoint use of material. As we had discussed, रेशो जितनी ज्यादा होगी उतनी अनफेवरेबल पोजीशन है. Here ratio in actual is more. It means in standard it is 120%, in actual it is 125%. So overall performance regarding the use of material actual is lower than the standard. It indicates the inefficiency in material use. Why it is showing inefficiency? Because standard input output ratio is 120% and actual input output ratio is 125%. Also, the cost, standard material cost per unit rupees 24 against the actual material cost per unit कितनी है? It is 25. So it is showing the inefficiency in the material use. So this is the concept of input output ratio. Homework question number 19. Page number again 71. In these questions, in case any doubt, do let me know. Input output ratio is completed. Now we will come to our next concept, that is EOQ. And last concept of today's class, EOQ. See, we had discussed what is inventory turnover ratio. हमने अपनी accounts class में भी in class 12th or in graduation we had studied what is the inventory turnover ratio, but now we had studied in detail what inventory turnover ratio indicates us, whether the materials are fast moving or slow moving. Higher the stock turnover ratio indicates the favorable position, lower the stock turnover ratio indicates the unfavorable position. Similarly, in case of input output ratio, as we had discussed, input and output, input divided by output into 100, कितना इनपुट लगा अकॉर्डिंगली कितना आउटपुट मिला, जितना ज्यादा रेशियो इट मीन्स उतनी अनफेवरेबल पोजीशन. If the ratio is less, then it indicates the lesser manufacturing losses. It means the favorable positions to the manufacturing concerns. Now we will discuss the economic order quantity. See, these all are the techniques of material costing, material control, you can say. How we can
we had also studied what is material control, what is the importance and objectives of material control, why there is a usage of material control. As we all know, it plays an important role in the total cost. So it is very important. These inventory turnover ratio, input output ratio, and the EOQ. There are other techniques as well. Today we will discuss EOQ also. EOQ is the reorder quantity. It is a technique for the material control, technique of material control. Economic order quantity is the reorder quantity. See, inventory turnover ratio shows the how much of the inventory we are holding for how many days, and इनपुट आउटपुट रेशियो, हम कितना इनपुट लगाया, कितना आउटपुट उससे हमें मिला, दैट इज द इनपुट आउटपुट. एंड EOQ shows कि at what levels we will again order for our inventory, how much inventory is left behind, and then what is the time that we will again order the inventory, that is our EOQ. We will discuss in detail now. So, economic order quantity, also known as reorder quantity. It is the standard quantity of the material which is normally placed on order when the stock reaches the reorder level. किस टाइम पे हमें दोबारा से रीऑर्डर करना पड़ेगा मटेरियल को, दैट इज द रीऑर्डर क्वांटिटी. It is also known as economic order quantity because the quantity which is most economical to order. We had discussed there are three principles of material control, या materials, three E's, that these are very very important: economy, efficiency, effectiveness. So economical to order, the quantity which is most economical to order is the economic order quantity. There are various costs involved, that is ordering cost, carrying cost. Ordering cost is the कितने number of orders में हम लोग cost को involve कर रहे हैं. Carrying cost we will discuss in detail. Carrying means handling, holding the cost is the carrying cost. Okay. As we had discussed, it is also known as reorder quantity. Why? Because it is that quantity which is most economical to order. There are various types of costs involved. First is the purchase cost. For ordering the material, purchased cost is the important cost. Ordering cost, we'll discuss what is ordering cost and what is carrying cost. Carrying cost, also known as storage or holding cost. Ordering cost is the cost of placing an order with the
supplier. For example, any cost related to placing an order with the supplier, that is the ordering cost. Example, salaries of those engaged in placing order. Negotiations करने जा रहे हैं, who are handling the orders, who are handling the material from the vendor to the factory. These all the salaries of these persons comes under the ordering cost. What is carrying cost? Carrying cost is the cost of holding the stock, yes, holding the material in storage, warehouse में जो हम लोग materials को रख के रखते हैं, that is the holding. Example, cost of operating storage houses, stores, उनकी salaries, who are those who are maintaining the rent, that all comes under the carrying cost. Interest on capital, locked up in stores. Cost related to deterioration, wastage. These all costs comes under the carrying cost. Note, EOQ is that point where your ordering cost will be equal to your carrying cost. EOQ लेवल पे ordering cost carrying cost के equal होती है, and we have to compute. EOQ may be required to compute. क्यों compute किया जाता है EOQ को? कौन सी situation में किया जाता है? With discount, two situations. Second is with discount, without discount and with discount. So, if there is no discount, then EOQ is equal to the formula of EOQ. We will also discuss the derivation of E. कैसे derive हुआ? Divided by C into S. This is the formula. 2 into A into B upon C into S under root, where A is equal to annual demand, P is equal to ordering cost per order, C is equal to cost per unit, S is equal to storage or carrying cost as percentage of average inventory. This is the formula of EOQ. 2A into B upon
C into S under root. We will discuss, we had discussed there are three costs. First is purchase cost. Formula for purchase cost is total number of units multiply by purchase price per unit. Second is ordering cost. How to compute the ordering cost? It is number of orders multiply by cost per order. And third is carrying cost. Formula is half EOQ into C into S. It means half EOQ means average stock multiply by storage and carrying cost. This is a formula for carrying cost. Carrying cost compute करने का formula है. Now we will derive the formula. Derivation. Derivation में हमने बात की at EOQ ordering cost is equal to carrying cost. Ordering cost is number of orders multiplied by cost per order. Or carrying cost is average stock multiplied by storage carrying cost, you can say. Number of orders means annual demand divided by EOQ into cost per order. Cost per order we had discussed ordering cost per order is we have indicated P. So it is B. Average stock half into EOQ into C into S. Annual demand is A divided by EOQ into B is equal to half EOQ into C into S. We derive the equation 2 into A into B is equal to divided by C into S EOQ का square. So EOQ is equal to under root 2 into A into B upon C into S. This is the derivation of EOQ as per the formula. When we will discuss in practical questions करेंगे, then आपको और clarity होगी. इसका एक graphical presentations भी करते हैं. Graphical presentation of EOQ. EOQ is where the ordering cost is equal to the carrying cost. जो point होता है हमारा
that is the EOQ level. We can say here it is our cost. This is units per order at y-axis. ऑर्डर्स हमारे ऑर्डरिंग कॉस्ट मैं एग्जांपल लूं, जैसे जैसे हम लोग ऑर्डर्स करते जाएंगे, एक ट्रक में हमने 50 आइटम्स मंगाने हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो आने की कॉस्ट होगी उतनी ही रहेगी, और हमने नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ाने हैं, 5 की जगह 10 करने हैं, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑर्डर्स के साथ साथ कम हो जाती है। जितनी ज्यादा यूनिट्स उतनी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम। कैरिंग कॉस्ट हमारी ऑर्डर्स के साथ साथ बढ़ती जाती है। Total cost is sum of the number of units multiply by purchase price. So we will derive total cost like this. The point where the carrying cost and ordering cost are same, that point is the EOQ level, where this is the reorder quantity. At this point, what will we do is we have to reorder the quantity. The cost is minimum at this point. That's why it is known as the economic order quantity level. This is a graphical presentation. We have also done the derivation formulas of EOQ. So in today's class, we had discussed 3 topics. First is practical topics. First is inventory turnover ratio. Second is input output ratio. And third is the EOQ level. We had done practical portion for inventory turnover and input output ratio. We will discuss the practical problems. We will do the practical problems in next class for EOQ level. Also in theoretical portion, we had concept the meaning of material, the material control, its objectives, its importance, its requisites. In next class, we will discuss the another practical topics, that is the stock levels and the EOQ levels, and we will discuss what are the relationship between our stock levels and the reorder quantity. Okay, thank you for this class. Okay, thank you so much.